Well, the Delhi Crime Branch has initiated a probe in the oxygen racket case. Delhi Crime Branch raided multiple locations in a bid to nab key accused Navneet Kalra, who is the owner of Khan Chacha restaurant, several other restaurant bars in Delhi's Khan Market area. Hundreds of oxygen concentrators were recovered in raids on Thursday and Friday. Delhi police have arrested 4 people, but the hunt for the key accused Navneet Kalra is still on. Navneet is accused of hoarding and black marketing of oxygen concentrators. He was selling these concentrators without having a proper license. India Today has learned that Navneet was staying at his farmhouse in Delhi's Chhatarpur and had left the place along with his family before cops raided the location. Well, the fight between the centre and the Delhi government over the ongoing crisis of oxygen has now taken a new twist. As the centre claims the Delhi government does not have enough storage space for the oxygen it has demanded. The centre says that the Arvind Kejriwal government has been unable to deploy the demanded oxygen, which is causing a delay in the turnaround of tankers sent for supply. The centre has also said that this delay is impacting the supply for other states as well, and that the mismanagement indicates hoarding and black marketing of oxygen by the state. This as central agencies carried out a survey in top hospitals in Delhi to assess their stock. As per the survey, hospitals across board have 1.2 times oxygen available for the daily requirement. The agency further claims that some hospitals have enough stock to last them for the next 4 to 5 days, as the oxygen supply to Delhi was increased by 50% in the last 2 days. केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस तरह से एक दिन उन्होंने सहयोग किया और दिल्ली को पहली बार 700 से ज़्यादा टन ऑक्सीजन मिली, हालात इसी तरह रहने तक 700 टन तो कम से कम सुनिश्चित करके रखें। उसके अलावा भी ज़रूरत है, लेकिन 700 टन कम से कम सुनिश्चित करके रखें। Well, as India faces chronic shortage of oxygen supplies and ICU beds, the Indian Medical Association has asked the central government to impose a nationwide lockdown to replenish the healthcare system. The IMA has also slammed the health ministry, calling its behavior lethargic and inappropriate. IMA is advocating that people's life is more important than the economy. It's also said that it is unfortunate that the government has failed to make the necessary roadmap to ensure vaccine stocks. To stop the spread of the virus, 18 states and union territories have already imposed a full lockdown, and more than 11 states and union territories have announced a partial lockdown. Delhi and UP have announced extension of lockdown by another week. अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। And now on to our hospital horror segment, where we focus on stories of apathy and negligence from overburdened healthcare facilities in the middle of the second wave surge. An FIR has been registered against the officials of a hospital in Talegaon area of Pune for allegedly refusing the body of a COVID-19 victim to his son over non-payment of the bill.
According to the complainant, the 51-year-old succumbed to the virus on the 1st of May. भारतीय दंड संहिता में एक धारा है 297 कि मृतक के साथ खिलवाड़ करना। मृतक का बेटा भी कोरोना से रुग्ण था, ठीक हो जाने के पश्चात उसका कंप्लेन लिया और उसमें मामला दर्ज कर दिया है। Another incident of apathy from Bihar's Gopalganj, where 3 people can be seen carrying a COVID-19 infected body in their arms due to the unavailability of stretchers there. Relatives of the deceased also accused the hospital staff of sheer negligence, claiming that the body wasn't even wrapped. सर क्या कैसे ले जा रहे हैं मरीज को? गोद में टांग के ले गए स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से। क्या पॉजिटिव मरीज थी? क्या हुआ था मरीज को? मरीज जो सांस फूलने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन पे थे एक्सपायर। अभी कहाँ ले जा रहे हैं आप? अभी आपको घर लेके जा रहे हैं। अस्पताल में कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया। More news from Bihar, where there is no end to hospital nightmares. India today visited one of the biggest hospitals in Bhagalpur to find that COVID and non-COVID patients were sharing the same ward. Not just this, relatives were seen attending to their COVID-positive patients in hospital. Ashutosh Mishra with this ground report. शायद मेरा पापा बहुत रखता था। डॉक्टर देखा बोला बेटा इसको आईसीयू का जरूरत है। वो जाते थे बोलता था नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। काल भी नंबर नहीं के गए, काल भी नंबर में लगाए सर। 60% पाती है ऑक्सीजन नंबर है, 60% को नहीं देंगे। These are frantic pleas one would hear across the country. This is one of the biggest hospitals in Bihar's Bhagalpur. With tears in their eyes and a heavy heart, both sons of Shyam Sundar carry the body of their father within the premises of Jawaharlal Nehru Hospital. He could have been saved if only he got an ICU bed on time. This regret is going to haunt them for the rest of their lives. स्थिति बहुत खराब है, इसलिए आए हुए थे बोलने के लिए कि जाके देख लीजिए। तो कोई डॉक्टर ही बोल रहा है नहीं है यहाँ पे। डॉक्टर नहीं मिले देखने? बोल रहे हैं यहाँ पे कोई डॉक्टर है ही नहीं, अभी एक ही डॉक्टर है। रोज कितने बजे आते हैं डॉक्टर देखने? ऊपर एक भी डॉक्टर नहीं आता देखने के लिए। आखिरी बार कब आए थे देखने? आज तक ऊपर कोई डॉक्टर गया ही नहीं देखने के लिए। कितने दिन हो गए? 26 को आए हुए यहाँ पे। तब से एक भी डॉक्टर आपको देखने नहीं है? 10 दिन से ज्यादा नहीं गए हैं। बस नर्स वगैरह आती है, नाप के सारा चीज ले जाती है। डॉक्टर नहीं आते देखने? And the horror does not end there. The family members are being forced to sit with the infected patients inside COVID wards. बोले सर हम रोज जाते हैं, सिस्टर बोलती है उधर जाइए, वो बोलते हैं उधर जाइए। हम अकेला है, हस्बैंड मेरा इतना सीरियस है कि 35 पे हो गया था ऑक्सीजन लेवल, तो हम यहाँ भर्ती हुए हैं, लेकिन एक भी कोई दवाई नहीं लिखे हैं हमको। सिर्फ ऑक्सीजन और सुई मिल रहा है, कहता है कि दवाई तो मिल रहा है आपको, ऑक्सीजन मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। इस तरह जान मार रहे हैं मरीज को जानबूझ के। India Today team asked the hospital staff why the family members were being allowed inside the COVID wards. कोविड वार्ड में मरीजों के परिवार वाले क्यों हैं यहाँ पे? पूरे अस्पताल में के परिवार के लोग हर वार्ड में क्यों बैठे हैं? मजबूरी है पेशेंट का। कायदे से वहाँ नर्स या डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। हम लोग के स्टाफ भी है वहाँ पे, काम कर रहे हैं सर, वहाँ पे सब कोई है। परिवार के लोगों को क्यों बैठने दिया जा रहा है कोविड वार्ड में? A 6-month-old pregnant lady tends to her COVID-positive husband, risking herself along with her unborn child. आप लोग खुद जाते हैं अंदर बैठ? हम लोग खुद रात भर पेशेंट के साथ सोए, कोविड का पेशेंट है उसके साथ में सोए हैं रात भर सर।
बताइए, मेरी बहन, इसकी हस्बैंड जो है सर अति है, पॉजिटिव है, और ये डिलीवरी पेशेंट है, ये साथ में रात भर उसके रही है, लेकिन कोई डॉक्टर ना कोई नर्स देखने आया। With no COVID protocols in place, the bodies of COVID patients are lying on the hospital premises, exposing hundreds to the deadly virus. When you visit the new medical college hospital building of Bhagalpur, this government hospital, that give you one impressive image. All cleanliness around, the patients are given oxygen cylinders are kept in reserve, nurses, doctor on duty. But the biggest crisis can be seen in the old block. First, there are no doctors, no nurses on duty available for the patients round the clock. Secondly, the negligence that we are seeing all across the state and almost in all the government hospitals, that it is the relatives and the family members of the COVID patients, those who have to sit with their patients inside the COVID wards round the clock. And many complaints, not a single doctor came to visit them, to see them, to inquire about their health for hours, not just for hours, but for days. And that's the negligence we can see, and perhaps why this is going to be a further source of spread yet again, while Bihar is battling worst against this pandemic. There is no end to the hospital's negligence. A family member was asked to put oxygen clip on COVID patient all by himself. ऑक्सीजन तो मिला ही नहीं सर, यही तो बात है। मिल जाता तो शायद बच जाते हैं। एक आदमी ऑक्सीजन लगाने वाला भी पता नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर है या अदर आदमी भी है, वो पेशेंट को देख करके ऐसा कि मुझे ही बोला कि ऑक्सीजन का क्लिप लगाइए। अगर मुझे ही अकल होता, इतना मुझे ही मालूमात हो, मैं डॉक्टर रहता तो मैं क्लिप नहीं लगा देता। कोई आया ही नहीं बचाने के लिए? नहीं, कोई नहीं। As the second wave engulfs the rural areas, an overburdened health infrastructure is crumbling and is ill-equipped to cope with the rising number of cases. Dead bodies in the premises waiting for ambulances. Patients have to wait for paper clearance. Relatives have to run pillar to post to ensure oxygen supply. The ignorance of the medical staff, the family members are forced to sit in COVID wards. This is all happening in one of the biggest hospitals in Bihar's Bhagalpur. This explains why the hospitals are itself now a COVID spreader. But the negligence is taking more and more lives. This is health emergency in Bihar, which requires highest attention from the leadership. With this ground report in Bhagalpur, Bihar.